So we are going live. Yes, dear God. Thank you. Thank you. Good morning, everyone. Today we have with us CA Alok Sethi, who will take us to create Excel dashboards. Before we start, let me introduce Alok ji. Alok ji is a result-oriented professional having a 10 plus years of overall experience in corporate training and professional exceptional team building skills for increasing a company's productivity by imparting new skills and upskilling employees as well as students. He conducts seminars, lectures, webinars, and workshops on soft skills and advanced Excel skills and trainings to update employees on company goals as well as educate students. He is a practicing chartered accountant, and his key skills are Excel, advanced Excel, Tableau, Power BI, as well as financial modeling. Let's welcome Alok ji. Alok ji, most welcome. You can start. Thank you. Yes, Alok ji. Thank you. Thank you for giving me this opportunity to be on the platform to serve the members. Good morning, Adukia sir. Let us start. I have shared the file which I'm going to use for the session in the chat box. So request all the members to download it and just update before I start the session, because I have another session at Bly branch, and actually there is some work which is going on, construction work on the road. So my travel is little preponed. So I was about to leave at 8:15, but now I'll have to leave by 7:45 to be there on time. So what we'll do is first 30 minutes I will be focusing on what is the methodology to build a dashboard, and next 20 minutes I will be there in the meeting. I will take all the Q&As and we'll discuss. Okay, so first 30 minutes I want everyone to be very attentive in seeing what I'm doing, listening to me, and next 20 minutes we will take the Q&As and all that. So I hope my screen is visible to all. Yes. Okay, so this is the file that I've shared with everyone, and I'll just show you what we are intend to make. So this is the data that we have. It's a basically HR data, HR department data of an organization. So you will see that there are around 26 columns in this data, or more than that. There are 28 columns because 26 alphabets we have. So 26 plus 2, 28 column data it is, and you can say it is 1471 row data. Okay, so this is the size of the data. Alok ji, yes, Alok ji, sorry to interrupt you. Actually, your voice is having echo. Have you logged in from 2 devices? No, ma'am. I'm having echo. 2 voices are there. Okay, just a minute. नहीं, echo आ रही है? बहुत ज़्यादा problem नहीं, we can understand. हाँ, नहीं आ रहा echo. Is it fine now? Yeah, it should be okay. Go ahead, sir. Time कम है आपके पास. Okay. So yes. So this is the data which we have. Now, if I ask you some question based on this data, how many employees are there, how many employees have left the organization, which department has how many employees, how many males are there, how many females are there, किसका क्या job role है, कितने सालों से वो organization में हैं, कितना काम करते हैं, कितना salary है. So would you be able to answer by looking at this data? ये data आपके सामने है, और अगर मैं if I ask many questions to you, would you be able to answer all these questions? I think we'll have to sort it out in those. Yeah, you will have to do a lot of work to answer the question precisely. We will not be able to answer. And if I ask you, you have to present all the information in one picture, in a form of a picture, in a form of a story, so that by looking at the picture, all the information which is crucial for the management to take any decision would be available at one place, one spot. एक बार देखते से सब कुछ पता चल जाना चाहिए. तो क्या ऐसा लगता है एक्सेल में ऐसा पॉसिबल है? Should be. Yeah, it should be. It is.
because of the use of dashboard, because of the power of dashboard. Now next slide, next sheet, I'm going to show you what exactly a dashboard is. Can you see something on the screen? Yes. Yes. And what you see is a picture which is a dashboard and which has some numbers. Okay, so it has employee count, it has attrition count, it has attrition rate, it has active employees, average age of the employee. Attrition means, does anyone know what does attrition means? Yes, It's sir. a very People buzzword. leaving the Told you. organization. Exactly. Yeah. Leaving the organization. So if Leaving any person is leaving the organization, that is called as attrition. So this data is focusing on studying the cause of attrition in an organization because it's a cause of concern. So in this picture, you will see that how many employees were there, कितने छोड़ के गए, क्या rate था जितने छोड़ के गए हैं, कितने बच गए हैं, what is the average age, what is the attrition by male and female. And then the important thing is that department wise attrition you will be able to see that there are 3 departments and you can find out that 38% people are leaving from R&D, 133, that is 56% are leaving from R&D, 38% are leaving from sales, and 12%, 5% have left from HRD. Then what is the age of the employee in the organization? And we have created a bar graph, a bin size, that you can just find out कि कितनी age के कितने employees हैं. So you can see from this chart that 32 age we have 274 employees. At 60 age we have only 5, and at age 60 there are only 17. Then job roles, and then attrition by gender for different age groups. So this is what exactly a dashboard is. Okay. Now isn't it beautiful or amazing? Like अगर आप इस डेटा को देखें, इस डेटा को देखने के बाद अगर आप इसको देखते हैं, what looks more attractive to you? I would expect quick answers because I'm short of time today. So I'm very sorry about it कि ये session थोड़ा सा जिस तरीके से plan किया था वैसा I will try to deliver, but there is some circumstances कि मुझे थोड़ा सा rush में हूँ. So I would like everyone to quickly answer and be active in the chat board, in the chat box. Okay, so that I can proceed accordingly. Okay, now you would like to learn how to create this dashboard. Okay. And I am a Bollywood movie lover and I like songs also a lot. ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा तरीका बनाया और अडुकिया सर जो है उनको एक्रोनिम बहुत पसंद है, तो उनके साथ रह के ना मुझे भी आदत लग गई कि एक्रोनिम यूज करे हर जगह, और मैं उसमें बॉलीवुड मसाला तड़का डाल देता हूँ थोड़ा सा कि आप लोग को भी आज के बाद डैशबोर्ड के जो स्टेप्स है वो याद रहेंगे, नींद में भी कोई उठा के पूछेगा तो बता देंगे. नाउ कैन यू गेस द नेम ऑफ द मूवी? Can you guess the name of the movie? धड़कन. Very good. चलिए. Now so धड़कन में हंसी आपकी हंसी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, वो लानी थी मुझे. Thank you sir. Thank you. देखिए धड़कन एक मूवी थी जिसमें ये 3 कैरेक्टर थे, राम, अंजलि और देव. तो हम देव पे फोकस करेंगे विच इज सुनील शेट्टी, और इस मूवी के डायलॉग्स काफी फेमस थे और उसमें से टाइम कम है लेकिन फिर भी मेरा जो स्टाइल है, आई डोंट वांट टू मिस ऑन माय स्टाइल. तो एक डायलॉग था इस मूवी का जिसमें देव अंजलि को बोलता है कि अंजलि तुम मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भुला दो ये मैं होने नहीं दूंगा. तो ये डैशबोर्ड भी ऐसा ही है. ये जो सेशन हो रहा है, आप डैशबोर्ड भूल जाएं ये मैं डैशबोर्ड भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और आपको भूलने ही नहीं दूंगा मैं. ठीक है, चलिए अब आते हैं स्टेप्स पे. तो कोई भी हम डेटा विजुअलाइजेशन का काम करते हैं. डेटा विजुअलाइजेशन इज बेसिकली स्टडिंग द डेटा इन द फॉर्म ऑफ विजुअल. मतलब आप इमेज बना के, जैसे मैंने आपको फोटो दिखाई, अगर मैं लिखता राम, अंजलि, देव और पूछता कौन सी मूवी है तो आपको नहीं पता पड़ता, एकदम से याद नहीं आता. लेकिन मैंने उसका पोस्टर लगा दिया तो आपने इमीडिएटली आंसर दे दिया कि इट इज धड़कन, विच इज द राइट आंसर. ठीक है, अब एक्सेल के अंदर मूवी आ गई. ठीक है, ये फोटो आ गई. फोटो देखने से हमारे को चीजें क्लियर होती है. तो इसी तरीके से जब हम डैशबोर्ड बनाते हैं, इट इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ डिलीवरिंग द डेटा. ठीक है, विच इज वेरी यूजफुल. नाउ DAVE, डी स्टैंड्स फॉर डिस्कवर द डेटा. तो पहली बार जब आपके पास डेटा आता है, द फर्स्ट स्टेप दैट यू डू इज टू डू द डिस्कवरी. पहली बार डेटा देख रहे हैं या कोई डेटा आया जिस पर हम काम कर रहे हैं, तो उसको पहले अच्छे से एनालाइज करेंगे कि डेटा में क्या क्या कॉलम है, क्या क्या रो है, कितना बड़ा डेटा है, क्या क्या कॉलम मेरे काम के हैं.
ठीक है, किससे क्या इंफॉर्मेशन निकल सकती है, ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू स्टडी। तो पहले आप डेटा को पढ़ेंगे अच्छे से। दूसरा स्टेप होता है एनालाइज, टू क्रिएट कनेक्शंस अमंग द डेटा फील्ड्स। तो जितने सारे डेटा सोर्सेज, डेटा हमारे पास कॉलम्स हैं, उसमें से हम कनेक्शन कैसे बना सकते हैं, उसको कनेक्ट कैसे कर सकते हैं आपस में, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। थर्ड स्टेप इज टू विजुअलाइज। विजुअलाइज मतलब आपको इमेजिन करना है, ठीक है। इमेजिन क्या करना है कि हम डेटा से क्या पिक्चर बना सकते हैं, या कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं इस डेटा को, या हाउ वी कैन विजुअलाइज इट, हाउ वी कैन क्रिएट द डेटा इनटू अ चार्ट which can be easily understood by the people. And fourth is to explore. Explore means the possible ways of creating and displaying the data in an attractive manner. जैसे मैंने ये डैशबोर्ड बनाया है, ठीक है, ये इमेज दिख रही है। अब इसको बनाने के लिए पीछे का जो बिहाइंड द सीन्स अगर हम जाते हैं, तो इसके पीछे बहुत सारा वर्क है, बहुत सारे फॉर्मुलेज हैं, बहुत सारे पिवट टेबल्स हैं, ठीक है। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच हैव गॉन इनटू दिस, देयर इज अ इमेज आल्सो, एवरीथिंग। मतलब it is not possible only to teach anyone to create a dashboard in one session, but what in of 1 hour, ठीक है। I generally take 2 or 3 hours, but 1 घंटे में हम क्या कर सकते हैं कि I can just give you the methodology or the direction to go about it, कि करना कैसे है और करना क्यों है। These two things are very important. One thing is that कि why we have to do, why we have to learn to create a dashboard, because it is the need of the hour. अगर आपने ये नहीं सीखा है तो कहीं ना कहीं आप अपनी चीजों में पीछे रह जाएंगे, बिकॉज AI has come, everything is becoming automatic now. So if you don't learn how to create a dashboard, then definitely there is something which you are going to miss create. And second thing is that it is very effective in giving us the output. चलिए, now having said this, let us move how to create a dashboard, because people are waiting for that कि करना कैसे, ये बताइए। तो let's start. So what you have to do is, this is already a dashboard background which I have created. Just to save time, I will explain what I've done. Okay, and I have lots of videos on my channel which you can watch to actually understand the steps. Okay, so you need to understand that first you have to create a layout. ये देखिए एक blank screen है. It is just, I'll just hide all these. ठीक है, तो ये मैंने छुपा दिए हैं जितने भी ग्राफ्स मैंने बनाए थे। अब आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, ठीक है। लेट मी जस्ट हाइड दिस आल्सो। नाउ इफ यू सी, यू विल बी एबल टू सी दैट देयर इज नथिंग बट द हेडिंग्स। ये मैंने टाइप किया है, HR एम्प्लॉय एनालिसिस डैशबोर्ड XYZ लिमिटेड। देन दिस आई हैव क्रिएटेड एज अ टेक्स्ट ओनली विद अ बैकग्राउंड कलर, और उसका फॉन्ट साइज और ये चेंज कर दिया है। बट व्हाट इज अट्रैक्टिव एंड व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इज दिस वन। ये जो है, ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर नॉट टाइप्ड, दीज नंबर्स आर नॉट टाइप्ड, दीज आर फॉर्मूला ड्रिवन नंबर्स। यहाँ पे सब में कुछ ना कुछ फॉर्मूला लगा है, और वो जो फॉर्मूला है वो नंबर कहां से लेके आ रहा है? कैन एनीवन टेल मी वेयर आर दीज नंबर कमिंग फ्रॉम? ये आउटपुट जो आपको दिख रहा है ये कहां से आ रहा है? व्हाट इज द इनपुट फॉर दिस आउटपुट? डेटा, वेरी गुड, The data which you showed. एग्जैक्टली द डेटा विच आई शोड। तो जो मैंने डेटा दिखाया था वो डेटा इस शीट पे था, इनपुट HR वाले शीट पे, और इसी शीट से हमारे पास डेटा से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया इस डैशबोर्ड में, ठीक है। तो ये जो डैशबोर्ड आपको दिख रहा था अभी, यहाँ पे Ctrl+6 आई प्रेस, ये आपको जो दिख रहा है इट इज अ इमेज। इसकी मैंने पिक्चर निकाल दी है, उसको स्क्रीनशॉट ले लिया था, ठीक है। नाउ हाउ टू क्रिएट दिस, उसके लिए आपको क्या करना होगा कि फर्स्ट यू शुड नो सम फॉर्मूलाज, ठीक है, एंड यू शुड हैव द एंड इन माइंड। हम हमेशा ये बात करते हैं, जो हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सेशंस होते हैं, सीक्रेट के सेशंस होते हैं, बुक रीडिंग के, उसमें भी एक बात होती है कि यू शुड ऑलवेज हैव द एंड इन माइंड। आप क्या चाहते हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए। सेम थिंग यू कैन अप्लाई हियर ऑल्सो, कि वॉट एवर यू वॉन्ट फ्रॉम द डैशबोर्ड, दैट थिंग शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। पर्पस पता होना चाहिए आपको कि करना क्या है, कैसे करना है वो नेक्स्ट सेकेंडरी है, पहले करना क्या है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो आई वांटेड एम्प्लॉय काउंट, तो मुझे पहले ये मैंने लिखा एम्प्लॉय काउंट, फिर मैंने एट्रिशन काउंट लिखा, फिर मैंने एट्रिशन रेट लिखा, देन आई रोट एक्टिव एम्प्लॉयज एंड एवरेज एज। नाउ इफ आई हैव टू टीच यू द फॉर्मुलाज, वी विल टॉक अबाउट दिस आल्सो कि हाउ डू वी गेट दिस नंबर 1470। सो इफ यू सी दिस डेटा, पहला कॉलम जो है आपका डेटा का, आई विल जस्ट जूम इन सो दैट यू कैन सी,
It is showing the attrition और उसमें लिखा है yes and no. Now can anyone tell me what is the meaning of yes and what is the meaning of no? निकालेगा या नहीं निकालेगा? Yes का मतलब क्या है और no का मतलब क्या है? Yes का मतलब yes means he left the company. उसका attrition हो गया. Exactly. Yes means कि he has left the company and no means he is still there in the company. ठीक है, तो yes का मतलब ये होता है कि वो चला गया है छोड़ के, और no का मतलब है कि वो एक्टिव एम्प्लॉय है. अब मुझे बताइए, मुझे टोटल पता करना है कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं ऑर्गेनाइजेशन में, टोटल जो थे, चले गए और जो अभी हैं. तो अगर मैं इसको काउंट कर लूंगा तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा? If I count all the yes and no, would I get the answer? How many employees are there in the company? Yes or no? No. Why? इसमें तो टोटल का ही पता लगेगा ना सर. हाँ, टोटल ही चाहिए सर, टोटल ही चाहिए अभी. यस प्लस नो इज टोटल. यस, टोटल मिल जाएगा, टोटल मिल जाएगा. एंड इफ यू सी, अगर आप एक्सेल अच्छे से लोग जानते हैं एक्सेल को या आप काम में लेते हैं, ठीक है, since I am a trainer in Excel, I have a different this thing way of looking at Excel, but I will show you something जो आपको यहाँ पर 1 मिनट में पता पड़ जाएगा कि यहाँ पे अगर आप नीचे जाके देखते हैं तो काउंट में 1470 लिखा हुआ आ रहा है. Can you see the screen? Yes sir. Yes sir. Yes. So once we have selected this column, it is giving us the count. But I want the number over here. मेरे को नीचे से नहीं मतलब है. I want the number over here. तो मुझे वो नंबर चाहिए. तो पहला चीज तो ये है कि you should understand, you should know कि which formula to apply. तो what I have applied here is count A. Count and count A में difference होता है. We will not go into the formulas much because the time is less. But count is a function which will count the numbers in a cell, and count A count the alphabets. So हमारे पास yes और no थे, तो हमने क्या लिखा? I will just type in this formula so as to give you the real feel of it. So count A. Now what do you want to count? We want to count the number of employees. तो हम यहाँ से input करेंगे, and then what we will do is we will select all these columns, all these numbers, all these yes and no. तो अगर आप formula bar पे देखेंगे, I will just close this bracket. I will just zoom in. अगर if you see on this formula bar, the formula is count A, input HR data. This is the sheet name. A2 to A1471. This is the range. तो हम क्या चाह रहे हैं कि आउटपुट वाली शीट पे आप इनपुट वाली शीट पे जाइए और कॉलम A2 से लेके 1471 जो रो है उसका काउंट निकाल के दीजिए हमें. When I press enter, it gives me the count 1470. Clear sir? यहाँ तक ठीक है? Yes sir. Yes sir. Okay. Next, what we want is the attrition count. Now this is difficult. Difficult in the sense कि थोड़ा सा different formula लगेगा यहाँ पर, क्योंकि हमें सिर्फ yes count करवाना है उसको. ठीक है, एट्रिशन में जो लोग छोड़ के गए हैं वही काउंट करना है, तो yes काउंट करवाना है. तो आई हैव यूज्ड द फॉर्मूला ऑफ काउंट इफ. इफ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन एक्सेल. अगर आपको कोई कंडीशन दे दी है, लॉजिक दे दिया है, इफ यू वांट टू गेट ओनली वन आंसर, देन यू हैव टू यूज इफ विद काउंट. सो काउंट इफ टेबल 1 एट्रिशन कॉलम yes. दिस इज द नोटेशन. आप इस तरीके से इफ को लिखते हैं. ठीक है, सो अगेन इफ आई हैव टू जस्ट शो इट इज इक्वल टू काउंट इफ range. Now it is asking me range. Now the best practice to work in Excel, आप बार बार शीट पे नहीं जाएंगे क्योंकि ये तो 4-5 शीट है. अगर आपके पास 20-25 शीट्स है मान लीजिए और आपको पिवट बनाना है या आपको डैशबोर्ड बनाना है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू नेविगेट. आप भूल ही जाएंगे. इससे अच्छा क्या होता है कि आप शीट का टेबल का नाम दे दें. तो आई हैव गिवन द नेम ऑफ द टेबल एज टेबल 1. आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग. मैंने टेबल 1 लिखा, एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करूंगा और टेबल 1 के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं, जो भी हेडिंग्स हैं, वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है. कैन यू सी ऑल दिस? जितने भी कॉलम्स हैं हमारे टेबल के, वो सब डिस्प्ले में आ गए मेरे पास. सो आई हैव एट्रिशन, ट्रैवल, ये तो मुझे एट्रिशन चाहिए. तो दिस इज व्हाट द रेंज इज. मतलब आई वांट टू फाइंड आउट समथिंग फ्रॉम द एट्रिशन कॉलम, एंड व्हाट आई वांट टू फाइंड आउट फ्रॉम द एट्रिशन कॉलम इज अ yes. And I close the bracket and I get 237 as the number. तो ये क्या बता रहा है कि कितने लोग छोड़ के गए हैं. अब मान लीजिए आपको ये पता करना है कि कितने लोग हैं जो छोड़ के नहीं गए, तो आप क्या टाइप कर सकते हैं यहाँ पर? नो. इफ यू टाइप नो, यू विल गेट अ डिफरेंट नंबर. यू विल गेट द नंबर ऑफ एक्टिव एम्प्लॉइज. तो मैंने अभी क्या किया, ये एट्रिशन काउंट को एक्टिव काउंट में कन्वर्ट कर दिया. आई हैव जस्ट चेंज द सीक्वेंस ऑफ द डेटा. So that is all up to you. Active count, इतने लोग अभी हैं. तो what is the active rate?
83% एट्रिशन की जगह एक्टिव रेट कहलाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पर हम एट्रिशन लिख देंगे, एट्रीटेड एम्प्लॉइज, और ये ऑटोमेटिकली नंबर चेंज हो गया है, ये ऑटोमेटिकली नंबर चेंज हो गया है। कैन एनीवन टेल मी नंबर कैसे चेंज हुआ? बिकॉज आई हैव गिवन अ फॉर्मूला। फॉर्मूला चेंज किया आपने उसमें। एग्जैक्टली, फॉर्मूला चेंज किया, तो इसमें से ये नंबर माइनस करना था। पहले ये नंबर एट्रिशन रेट था तो एक्टिव काउंट दिखा रहा था, मैंने इसको एक्टिव काउंट बना दिया है, तो ये नंबर क्या हो गया? एट्रिशन काउंट हो गया है, एट्रिशन एम्प्लॉइज आ गया है। एंड वी हैव द एवरेज एज, एवरेज एज के लिए वी यूज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज। सो दिस फर्स्ट रो, दिस इज सिमिलर टू व्हाट यू सी ऑन द डैशबोर्ड, ठीक है। दिस इज जस्ट सिमिलर टू व्हाट यू सी ऑन द डैशबोर्ड। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार और। So this is what you exactly see on the dashboard. So इस dashboard में आपको दिखेगा there is employee count, attrition count, attrition rate, active employee and average age. ये हमने फॉर्मूले की मदद से यहाँ पे लेके आ गए। I hope this much is clear with everyone. Can we have some reply in the chat box? ठीक है, I would request the participant to be active in the chat box. अगर आपको यहाँ तक समझ में आया you can write clear in the chat box. Yes. Very much. Okay, thank you. Now coming to the second part, which is most interesting part basically, okay, and that is creating the charts, visuals, ठीक है। तो जितने भी charts हमको बनाने हैं, again the second step is iteration of the first step. पहले डिसाइड करना है कि चाहिए क्या, तो I want the attrition by department, okay, so I will create a new sheet and I will show you 1 or 2 charts, ठीक है। दो चार्ट मैं आपको बताऊंगा और आप उसको ध्यान से देखिए कि कैसे बन रहा है, बिकॉज दैट इज द हार्ट ऑफ द डैशबोर्ड। यही चीज मेन डैशबोर्ड में इंपॉर्टेंट है, विच इज हाउ टू क्रिएट पिवट टेबल्स। यू मस्ट ऑलरेडी हैव क्रिएटेड पिवट टेबल्स, बट वी विल जस्ट रिकैप इट। और जो लोग पहली बार डैशबोर्ड देख रहे हैं, पिवट टेबल देख रहे हैं, उनके लिए तो नया है ही। सो व्हाट यू हैव टू डू इज टू क्रिएट अ पिवट टेबल। फर्स्ट यू हैव टू गो टू इंसर्ट मेन्यू, इंसर्ट डेटा टैब। On the left hand side of this insert, you will see this pivot table. You click on it, you will come to form, table or range. Then you will have to select the table or range. Now answer my question. Do I have to go to the sheet, input sheet and write down table, select the range from there, or I can simply type in the address of the table, table 1. So I have given the name. So that is the benefit of giving a name to any table range. आप नामकरण कर देंगे, फिर आप नाम से बुलाएंगे, तुमने बुलाया और हम चले आए, वो वाला काम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हमने टेबल 1 लिखी, अभी देखिएगा होगा क्या। और हमने इसको बोला है कि इसी शीट में, एग्जिस्टिंग शीट में आप यहाँ से बनाना चालू करिए, ठीक है। यहाँ पे तो टेबल 1 ही रहेगा। दिस इज द एड्रेस of the cell where we want our pivot to be placed, and we will click on OK. Now as I click on OK, I will get two things. As I click on OK, I will get two things. One is the pivot table field. This is a box which is flexible. आप इसको कहीं पे भी उठा के रख सकते हैं as per your convenience. Okay. And this is fixed. ये जो है layout, ये जो आपने सेल बताया उसी सेल पे ये दिखाई देगा, ठीक है। So left hand side, what you can see in the background is a layout of the pivot table. What you see on the front, ठीक है, this box, it is the field. ये प्लेग्राउंड है जहां पे आप खेल खेलेंगे, ठीक है। Now there are 4 pillars of pivot table. There are 4 pillars of pivot table. One is filter, one is column, one is row and one is value, ठीक है। तो मैं इसको याद रखने के लिए या याद रखाने के लिए कहता हूं कि आपको 4 चीजें आती हैं, FCRV. So filter, column, row and value, FCRV. Now what is filter? Filter means that you want to filter any information. तो आप filter में वो चीज डालेंगे जिससे आपको filter करना है. Suppose I want to find out, अच्छा let us start with value first, फिर filter पे आएंगे. पहले value की बात करते हैं. Value का मतलब क्या होता है सर? What should come in value? You can see a sigma symbol besides this value. ये sigma का क्या मतलब है? We just sum up the values for the relevant field, whatever we decide in the rows or the columns or whatever. Sure. We just sum up those values. Yeah, exactly. So it is a sigma. Sigma means summation. So sum up. So we will just sum up the values whatever we are choosing. Okay. Now suppose I want to find out the employee count or the attrition count. So what I'll do is I will just select attrition and put in values.
ओके, सो पहले मैंने फॉर्मूला लगाया था, अगर आपको ध्यान हो तो वी हैड पुट अ फॉर्मूला. नाउ इफ यू डोंट नो द फॉर्मूला, हाउ विल यू पुट द फॉर्मूला? बट द बेस्ट थिंग अबाउट पिवट इज दैट यू डोंट हैव टू नो एनी फॉर्मूला. आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है ही नहीं, आपको बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है. और आई टीच इन यूपी, तो यूपी में क्या है कि अब तो योगी की सरकार आ गई तो थोड़ा सा वायलेंस कम है, लेकिन पहले क्या होता था, उठा पटक. तो मैं उनको बोलता हूँ आपको उठा के पटकना है बस, ये 4 खाने हैं, ठीक है, ये दीज आर सम बॉक्सेस, यू हैव टू जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, नथिंग एल्स. तो उठा पटक करना है और आपको नंबर दिखाई देंगे, ठीक है. तो यू कैन सी दिस नंबर्स. सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव सिलेक्टेड एट्रिशन, और आपको एट्रिशन का काउंट दिखाई दे दिया यहाँ पर 1470, ठीक है. बट ये तो हमारे पास पहले से था. आई वांट सम मोर डिटेल्स. सो व्हाट आई वांट इज आई वांट डिपार्टमेंट वाइज एट्रिशन, किस डिपार्टमेंट से कितने लोग छोड़ के गए हैं, ये मुझे चाहिए. तो व्हाट आई विल डू इज सर्च में जाइए और आप लिख दीजिए डिपार्टमेंट, ठीक है. अब आपको डिपार्टमेंट दिख रहा है. नाउ द क्वेश्चन इज कि अब 3 खाने बाकी हैं हमारे पास. वी हैव गॉट 3 sections blank, filter, row and column. How do I decide where I have to put it? रो में डालूं, कॉलम में डालूं या फिल्टर में डालूं, ठीक है. फिल्टर की बात बाद में करेंगे, पहले बात करते हैं रो एंड कॉलम की. तो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रो एंड अ कॉलम? इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, ऑब्वियसली आई शुड नॉट आस्क दिस, बट पूछ लेता हूँ. Row will be vertical. No, sorry, horizontal. And column will हाँ be vertical. एग्जैक्टली. सो इसलिए मैं पूछ लिया करता हूँ, कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है. यू आर राइट सर, रो इज हॉरिजॉन्टल एंड कॉलम इज वर्टिकल. अब हम एचआर डैशबोर्ड पढ़ रहे हैं, इसको याद रखने के लिए मैंने एक शॉर्टकट बनाया है विच इज एचआर सीवी. आप अपनी सीवी किसको देंगे? एचआर को. तो 2 वर्ड आपको याद रखने हैं बस. I have to give my CV to the HR so that I can get a job in the organization. So HR means horizontal rows. Rows are always horizontal. And CV, V, C means column and V means vertical. तो columns are always vertical. ठीक है. तो कॉलम वर्टिकल होते हैं, रो हॉरिजॉन्टल होती है. आपको डेटा कैसे चाहिए? अगर आपको डिपार्टमेंट रोज में देखना है कि एक के नीचे एक आए, तो आप डिपार्टमेंट को उठा के रो में रख दीजिए. So when you place the department into rows, what has happened? I have got the breakup of the number of attrition department wise. Can you see that? कि HR, R&D, sales, कितने कितने लोग HR से छोड़ के गए, R&D से छोड़ के गए और सेल्स से छोड़ के गए, उसका ब्रेकअप दिख गया आपको 1470 का, 63, 961 and 446. Is it clear? Now the management wants, अच्छा ये बताइए कि मेल कितने गए और फीमेल कितने गए हैं, ठीक है. तो मेल फीमेल कहां से आएगा? जेंडर से. So I will now select gender. And now I will put it in the column. So now what you get is you get the breakup of the department wise employees further divided into male and female. तो मेल कितने हैं और फीमेल कितने छोड़ के गए, तो हमारे को और बेटर पिक्चर नजर आ रही है, ठीक है. अब बोलते हैं सर एक काम और कीजिए, ये भी बताइए कि ये कौन से बैकग्राउंड से आ रहे थे, मतलब व्हाट बैकग्राउंड दे हैड. एजुकेशन की बात करते हैं. सो एजुकेशन अगर आप सेलेक्ट करेंगे और अब आपने, मैंने टिक करा है, आई हैव नॉट पुट इट एनीवेयर, आई हैव जस्ट क्लिक्ड ऑन द टिक चेक बॉक्स, ऑटोमेटिकली कहां चला गया? रो के अंदर चला गया. So now what you see is our pivot is more detailed now. So pivot is more detailed. तो HR के अंदर अलग अलग आपको एजुकेशन फील्ड वाइज एट्रिशन दिख रहे हैं, R&D में दिख रहे हैं, सेल्स में दिख रहे हैं. अगर मैं इसको उठा के एजुकेशन को कॉलम में रख देता हूं, what do I see? My pivot is like this. Now which one looks better? पहले अच्छा लग रहा था या अब अच्छा लग रहा है? Which tab? Previous one was better, I guess. Yes. Yes. So how do you decide whether to put in column and row? One is having a clarity of what you want. Second, by experimenting. अब इतना हर चीज का क्लैरिटी होता है लाइफ में, तो फिर दिक्कत ही क्या होती. तो अगर नहीं पता है आपको तो एक्सपेरिमेंट करिए ना, कौन मना कर रहा है. यू कैन डू व्हाटएवर एक्सपेरिमेंट यू वांट टू डू, नो वन इज स्टॉपिंग यू. अगर मुझे ये देखना था कि एजुकेशन वाइज किस डिपार्टमेंट से कितना गया है, तो मैंने एजुकेशन को ऊपर रख दिया, डिपार्टमेंट को नीचे रख दिया. अगर मैं डिपार्टमेंट को कॉलम में ले जाता हूं तो इस तरीके से दिखाई देगा. सो व्हाटएवर वे यू वांट टू प्रेजेंट द डेटा, यू कैन जस्ट फ्लिप अराउंड एंड सी व्हाट आउटकम्स यू आर गेटिंग. ठीक है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट task of creating a chart. How do you create a chart? So uske liye what I will do is I will just remove this education and I will just keep the department and the gender. Okay, I will just keep the department and the gender. Now when I click on the pivot table,
there is an option of pivot analyze, pivot table analyze. You click on this. आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे एक रिबन ओपन होगा, उसमें आपको ऑप्शन दिखेगा पिवट चार्ट का. So as you click on pivot chart, they will give you some recommendation. जैसे इसमें column chart recommend कर रहे हैं, so we will select this column chart, and once you double click on this, you will get this chart. ये chart आपके सामने यहाँ पे आ गया है पेज के सामने. Now what you have to do is इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई करने के लिए you can remove the grid lines. ठीक है, whatever things you don't require, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि HR, R&D और sales ये तीनों बार दिख रहे हैं. You want the actually legend male and female, which again, I don't want this department and all. You can right click and hide. So when you hide this, now this becomes little bit more sophisticated. If you want this to come on top, you can just bring it over here. You can right click and do whatever changes you want to do. ठीक है, तो आप इसको और ज्यादा ठीक ठाक कर सकते हैं. So this is first visual that we have created. अब आप बोलेंगे सर ये थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है. I want to create a pie chart. So no worries. Right click करिए. You just select this. Again go to analyze table. Go to pivot chart and then select a pie. And just double click on this. तो आपको pie chart मिलेगा. But if I ask you something, अभी ये चार्ट देखने से, if I hide the table and if I show you the chart, do you see any, can you just give any numbers, information in number, using numbers? If I hide the table and I will just show you the charts, do we have any numbers? Can we see any numbers? I think we'll have to add data labels. Exactly. So that is the next step. The next step is you click on this, you click on plus, and then you add data labels. So once you click on data label, you will get to see the numbers. Now exactly you can see कि कितना employees कहाँ से गया. Similarly on this chart also you can add data labels, and there are different methods of doing it. So if you do data call out, it will give you the department and the numbers together. ठीक है, so आपको department भी दिखाई देगा, number भी दिखाई देंगे. So this is how you can select. ठीक है, now this is one visual that I've created. Okay. Now let us not focus on creating a visual. Let us focus on how does we introduce slicer and timeline. Okay. So I will take one more concept of slicer and timeline. Okay. And I will show you what exactly a dashboard does. अच्छा, एक और काम करते हैं. हमने ये जो डैशबोर्ड बनाया है, हमने जो आज टॉपिक लिया था, उसका नाम रखा था डायनेमिक डैशबोर्ड. Now what do you mean by the word dynamic? It keeps on changing continuously. It keeps on changing. Okay, it keeps on changing. Okay, so just give me a moment. I'm just getting one call. Just a moment. Okay, so now I'll just show you what is a dynamic dashboard. Dynamic means that which keeps on changing as we change the data. So just focus on these numbers first. Okay, just focus on these numbers and see what happens when I do some changes in the data. Secondly, what is dynamic means कि whenever you have some slicer. So I will show you how to insert a slicer and a time. We don't have a timeline because there is no dates over here, but I will show you how to insert a slicer. So what is a slicer? Basically, this is basically a slicer. तो होता क्या है कि जब हम फिल्टर लगाते हैं, जैसे कि मैंने बात करी थी कि अगर आपको अलग अलग डेटा देखना है तो हमें फिल्टर लगाना पड़ेगा. तो स्लाइसर इज नथिंग बट अ फिल्टर इन डैशबोर्ड. ठीक है, ये डैशबोर्ड है. डैशबोर्ड बनता कैसे है? आप अलग अलग चार्ट बनाएंगे और सबको प्लेसमेंट कर देंगे, एक के पास एक रख देंगे. अगर आप देखेंगे इट इज जस्ट अ कॉपी पेस्ट. ये हमने चार्ट उठाए वहां से और यहाँ पे प्लेस कर दिए.
ठीक है, एक सिस्टमैटिक तरीके से प्लेस करेंगे, लुक गुड, ठीक है। अब व्हाट इज डायनेमिक? नाउ सपोज आई क्लिक ऑन HR. When I click on HR or you click on medical, let me just remove all these filters over here. First, okay, let me do it again. So we have created these two charts. Okay, now what I want is कि जब भी मैं कुछ सिलेक्शन करूं तो एक चार्ट चेंज हो जाए, ठीक है। तो वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि whenever you have created a pivot table, so let us see that pivot first. So I'll move this chart towards the right. इसको भी मैं इधर करता हूँ शिफ्ट, ठीक है। Now this is the pivot table. When you click on the pivot table, you go to analyze pivot table again. Here in the center, you will get insert slicer. Okay, when you go to insert slicer, you will get the option of inserting a slicer. So what we are choosing is a department, okay, and what we are choosing is the gender. दो चीजें मैंने select कर ली है, department and gender. So I've got these two cards over here. You can see them, you can call them as a card or a slicer or whatever you want, ठीक है। तो हमने ये department और ये slicer introduce कर दिए. Now see what they will do. Okay, just focus here and see what they are doing. So first, when I click on mail, what do you see any change in the diagram, in the chart? When I click on mail, do you see that the pie chart and the bars, there were two bars earlier, now it is only one bar. When I click on female, just look on the table also and on these graphs also. आप table, graphs सब कुछ देखिए, ये pie chart पे focus कीजिए, एक ही देखते हैं हम, so that you don't get confused. So आप male को देखिए, when I'm clicking on male, this pie is changing. When I'm clicking on female, again this pie is changing. When I'm selecting HR, you see only one this thing. When I click on R&D, you see only one. When I say this, if I select multiple options, choose multiple, then you will be able to choose two also. तो अगर आप डेटा को अलग अलग तरीके से देखना चाहते हैं, तो you can use a slicer and a what you can say chart. ठीक है. Now here I've already done that. So last thing, because my taxi has already arrived, so I will have to leave. But before leaving, what I'll have to, I wanted to show you that how this will automatically gets updated. ये dynamic कैसे होगा, इसको देख लेते हैं बस. So what I'm doing is in the input sheet, I'm inserting some more columns, some more rows. So what I'm doing is I just copied some of the data and I'm going to paste it in the end. ठीक है, तो मैंने यहाँ से copy किया और मैं इसको paste कर देता हूँ. ठीक है. So what I've done is I've just copied some of the rows in the data and I'm just pasting it in the end. So I've just copied it and in the end I've pasted. So earlier there were some values, there were some other values, but now there are some different. Okay. And now let us see what is the change in, is there any change in the output? Can you see that the number of employee count has changed? Yes, sir. It was 1470. Yeah. It has become 1489. Yes, sir. This active employees, it was 1233. It has become 1252. This rate has changed, and this number is remaining the same because we have not changed this. Average is same. Okay, but these two numbers have changed, and this percentage also. So this is called as dynamic dashboard, and based on this, the charts will also change. Okay, so that is basically not the entire thing about dashboard, but this is the main thing about dashboard that I've covered today, that how you can create a dashboard in Excel. Okay, so now we can have some Q&As if someone wants to ask any question. I've already shared this file. Okay, and yes, so any Q&As or your experience you want to share, we can have that. The nice session. एक बार और करना पड़ेगा कभी आपको जब टाइम मिलेगा. Yes, sir, definitely. I will share this file again because many people had joined a little late. So I'm just sharing this file again. You can just work on it.
my details are there with everyone. So whenever you face any issues, you can just connect with me, or we will have Yes, more Mandya, sessions. more. Yes, yes. We will request Shivani ma'am to plan more sessions like this. She is very actively doing this Sure, for sir. the members. Thank you, Alok ji, for your valuable insights. We all learned something new today. Thank you, ma'am. Anyone having any question can put up. अभी तो मैडम जाने दीजिए टैक्सी खड़े लेट हो जाएंगे आप बेला ही पहुंच Right, right. ठीक है. So thank you for all patient listening, and see you again soon. Yeah, I will share my YouTube link also.